नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं मिर्ची प्लस पर। Hello, my name is Prashant Narayanan and you're watching me on Mirchi Plus. Hi, my name is Jayesh Kardak and you're watching me on Mirchi Plus. मनीष तिवारी, निर्देशक हूँ फिल्म का, मिर्ची प्लस। मिर्ची प्लस। और आज मेरे साथ है एक बहुत ही क्यूट फिल्म की कास्ट और बहुत ही इंस्पायरिंग येट अ वेरी वार्म वेलकम टू मिर्ची प्लस गाइस। आई वुड वांट टू स्टार्ट विद यू सिंस यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज सच अ स्टेलर कास्ट और सबको एक साथ लाना कितना टाइम लगा एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू इन दिस? Maybe one of the biggest challenge was to cast the film, you're right, but Yeah. not the stellar cast because I'd worked with everyone in my earlier film. Right. But the bigger challenge was to find these bunch of nearly 20 kids who could play, could act and who could play football. Okay. So as I said during the trailer launch, that with a very small budget, I made calls to my friends and they came to do the film. So the challenge was to it was a huge ensemble cast, Right. and to find the right people like Ritvik Sahore, Avneet Kaur, Jayesh Kardak, who could bring the younger part of the casting in place. Were difficult. Amazing. This is to you, Ravi sir. Yeah. So, what is it कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल था जो आपने हाँ बोला इस स्क्रिप्ट के लिए और इस कैरेक्टर के लिए? मनीष तिवारी, बिकॉज मेरा कैमियो है तो बिकॉज मैं आई लाइक हिम, बहुत ही सॉर्टेड है लाइफ में और एकदम साधु टाइप के हमको लगते हैं। हमको लगता है कि एक साइंटिस्ट आदमी आया है पिक्चर बनाने के लिए। तो पता नहीं क्यों इशक में भी मुझे लगता था कि इनको नासा में रहना था ये हाँ कि सिनेमा तो ये बड़ा नासा टाइप हमको लगे तो मैंने ये फिल्म इसीलिए इनकी की एंड दैट इज व्हाट मेरा मतलब ये थॉट है। फिर पता चला ये सारे पागल बड़ी पगली है, सबसे बड़ा पागल ये सारे पगले मिलेंगे तो मैं भी कुछ ऐसा टाइप ही हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद तो एक आनंद लेने के लिए मैंने फिल्म की और इनके पास पैसे थे नहीं देने के लिए तो हम लोग मांगे ही नहीं तो पता इनके जो हलों से पता चल गया था कि पैसे देने वाले नहीं है इनके पास पैसे तो उस वो लड़ाई में भी नहीं पड़े तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई कुछ ना मिलना है, ईमानदारी से कपड़े मिलेंगे, एक वैनिटी मिल जाएगी, वहां आके काम करेंगे, आ जाएंगे। क्योंकि इशक में इन्होंने पैसे हमको और सब तीनों को दिलवाए थे, अब इनके पास तो थे नहीं। तो फिर खैर इस हिसाब से हम तीनों ऐसी बस में चढ़ गए और उसका नाम है चिड़ियाखाना। एक बहुत ही सुंदर संदेशा बच्चों को देती है जो उम्मीद छोड़ रहे हैं या जिनके पास उम्मीद नहीं है, जिनके पास ग्राउंड नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उनको लिए कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे लोग एक उम्मीद क्रिएट करते हैं और कैसे फिर सरकार उनके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो एक बहुत चूंकि मैं सरकारी तंत्र से जुड़ा हूँ, मैं एक सांसद हूँ, तो मुझे मेरे दिल के करीब की फिल्म है और मैं चाहूँगा कि ये मूवमेंट ये एक मूवमेंट है और ये बढ़े, बच्चे बढ़ाएं इसको, स्कूल की बच्चे बढ़ाएं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस देश में, वो फुटबॉल हो या जो भी स्पोर्ट्स है, इसको मैसेज करें, ट्वीट करें, फेसबुक पे लिखें इस फिल्म के बारे में, पेरेंट्स को जनवाएं, बच्चों को जनवाएं। तो ये मुहिम है, एक फिल्म नहीं है, एक बहुत ही पॉजिटिव मुहिम है हमारे जनरेशन के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ड्रग्स और शराब सिगरेट में जो उम्र में पड़ते हैं वहाँ हम उनको एक जिंदगी की ओर बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सब लोग इस मुहिम से जुड़े जिसका नाम है चिड़ियाखाना। अमेजिंग अमेजिंग। राजेश्वरी मैम, आपका जो कैरेक्टर था मैंने ट्रेलर में देखा, इट्स अ मदर हु हैज हर ओन चैलेंजेस, राइट? डू यू थिंक लाइक कुड यू रिलेट टू इट विद योर पर्सनल लाइफ एज वेल, और मे बी a woman in any manner has to go through a lot of challenges. So what do you have to say about that? The only thing that I would say would be that I have a son. Yeah. And being a mother is something that I know and I relate to. But the challenges that the character in this film goes through they are completely different. Okay. This comes from the fact that the woman does not have one particular base. She doesn't have a place which you call home. You move out with a child to different places trying to set a life, and then each time you know that you might just have to move. You're a woman on the run in a way. Yeah. And you have a child to look after and a child to who you need to give a life to. So those are challenges that you see this mother going through. And you have a child especially who's especially talented boy. The challenges are different because now you can see a future for the child and do your best that you can under your circumstances. So yes, you can relate to it as a woman. As a woman, yes, right.
I want to ask actually, आपने फुटबॉल सीखा कहीं पे? इससे पहले did you train या पहले से ही खेलते थे? You knew it. I used to be the badminton player, so the basic grace and the basic stamina and the basic style of being a sports person has always been there within me. But and I used to play football also. But for this particular thing, it was not that I was playing football. I was just telling some people about some things about how to do it. So basically, it's not even like a football coach that I'm playing in this. It's almost like a life coach that I'm playing in this. It's not about just playing football. It's about sportsmanship. It's about defeats. It's about victories, and it's about taking life, as it comes, but bravely. Yeah. That is what my part in this film is, and all these people who are there with me in the film, they all have done such a wonderful job in the film, that it is difficult for you to, when you see the film, how seamlessly it goes from one scene to another to another to another till we reach the climax, and then you realize that okay, fine, the film is over also now. So it feels like that, and I think everybody, including all the technicians, the cinematography in this film is so brilliant. The music direction has been done by Vivek Rajgopalan, and he's done a brilliant job in this. In fact, there's one of my favorite songs is something between me and Raj and Ritvik, and it's a beautiful track. So overall, as in everything, considering all the things, I think Chidiakhana is like one package which should not be missed. Is what I want to say to everybody. I mean, I want to ask you, Jayesh. I understand, like you've been, I got to know you do theatre and all, but then how was it working with such stellar cast? Definitely. Were you nervous? Not nervous, because that's my job. उसमें nervous हो गया तो point गया. Right. But definitely, all of these people are idols. I've seen them on the big screen at home. I've seen them work. In fact, when I showed my mom my trailer, my mom recognized, "Hey, Rajeshwari ma'am bhi hai." I was like, "तुझे पता है?" And she was like, "Yeah, obviously, we all know Rajeshwari ma'am." So this is the kind of impact they had, the kind of space they gave, because not being a very seasoned actor, I can tell that some actors haven't been comfortable in giving space to other actors, but I think I have a couple of scenes with Prashant sir, with Anjan sir, even with Rajeshwari ma'am, and great experience, great give and take, and it wasn't nervous at all, I feel. And I think the whole credit goes to Manish sir, because the kind of workshop we did before we started shooting, I think that was fruitful. Amazing. Basically, he's a very confident actor. Right. Amazing. So my last two questions, I want to start with you, Ravi sir. How do you manage the balance between, because अभी politics भी है आप, right? Acting and politics. Sometimes do you miss कि मैं उतना शायद acting नहीं कर पाता जितना, because अभी responsibilities भी हैं आपके पास. How do you manage that? Yeah, I have to see. I definitely miss acting. So अब मैंने क्या किया है कि मैंने गोरखपुर में अब मैं फिल्म सिटी क्रिएट कर रहा हूँ. वहाँ थिएटर के बच्चों को ट्रेन करता हूँ, ट्राइबल्स बच्चों को ट्रेन करता हूँ वहाँ पे. तो अब वहाँ पे थिएटर रंगमंच बहुत बड़ा कर दिया मैंने. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैंने मंच बनाए, वहाँ प्रेक्षागृह बनाए जिसमें बच्चे ट्रेंड होते हैं. तो अब वहाँ पे भोजपुरी फिल्मों की या नेपाली फिल्मों की वेब सीरीज, या मैंने एक पैन इंडिया फिल्म अभी वहाँ पे की, महादेव का गोरखपुर, वो वहीं पर बनाई. तो अब मैंने वहाँ पे फिल्म हब बना दिया. तो क्योंकि मैं वहाँ सेवा भी कर पाऊंगा और ऑक्सीजन भी ले पाऊंगा, जिंदा भी रहूंगा. सो मैंने वो सब, वहाँ पे थिएटर बहुत इमेच्योर था, उसको मेच्योर कर दिया. बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंस्पिरेशन. वो लोग भी, कलाकारों को भी धन्यवाद कि वहाँ के रंगमंच वाले और कलाकारों की, आज वहाँ के कलाकार सब कमा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं. तो जितनी भोजपुरी फिल्में बनती हैं, ज़्यादातर अब जब से मैं सांसद बना हूँ 80-90 फिल्मों की शूटिंग वहाँ मैंने करवा दी. अब फिल्म वर्ल्ड है. तो अब हाँ, सेवा और ये ज़रूरी है, बैलेंस करना भी, क्योंकि पार्लियामेंट में भी समय पूरा जाता है और क्षेत्र में भी रहना पड़ता है मुझे. गोरखपुर एक हॉट सीट है. यहाँ पे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 5 टर्म वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. अब मैं वहाँ हूँ, तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास भी है. बट या कम कर रहा हूँ काम, नेटफ्लिक्स का कुछ कर रहा हूँ,
एक अभी अक्षय कुमार और हमने एक फिल्म की अभी, कुछ फिल्में कम कर रहा हूँ, कम काम कर रहा हूँ, लेकिन सिनेमा छोड़ूंगा नहीं मैं, सिनेमा करता रहूंगा। ये बात मैंने सबको, सब जानते भी हैं पार, बट सेवा करूंगा कि अंग्रेजी में कहावत है टाइम टू पे बैक। अब मैं उस स्टेज पे, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, प्रकृति ने मुझे इतना कुछ दे दिया, तब ये लेके तो सब जाऊंगा नहीं, ना कोई जा पाएगा। तब मैं इसको रिटर्न करने, मेरी मदद किसी ने कभी की नहीं लाइफ में, तो अब कोशिश है कि मैं कैसे लोगों के जीवन में कुछ कर पाऊं, तो एक पावर मिला है वो मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। बहुत भाग्यशाली हूं मैं, और ये बैलेंस कर रहा हूँ। हालत खराब होती है, भाग दौड़ करना पड़ता है, भैया लोड लेना पड़ता है, बट यू हैव टू डू इट। एक जिंदगी है आपको, और मैं खुद चाहता था कि मैं सिनेमा में आऊं, मैं खुद चाहता था मैं राजनीति में आऊं, तो ये आपके खुद के लिए वे टास्क हैं, आपको उसमें बहुत खुश रहना चाहिए, इसमें कोई रोना धोना नहीं है। Amazing that is. This is to you, my last one. So you've been working since long back. आपने जो starting में you did a show called Margarita, तब, and it was an out and out progressive show. Yes. Do you think as an audience हम लोग थोड़े से restrict हो रहे हैं now, because you've been doing amazing work, and roles for women, are they getting better? Well, for me, I can say that I got very lucky each time with the kind of roles that were offered to me and what I ended up doing. I won't say they were all over the place and you had the best, but yes, I did choose to do good roles and they did come my way. Yes, there are more stories being told. Restricted audience, no, I don't think so. Now, in fact, you can say every story any which way that you want to, because there are so many platforms to show your films. Yes, what we used to have those days more than anything was the censors were there, of course. Right. But there's also something called self-censorship, which we automatically adhered to, which I think today people are kind of going that extra mile to go out of what you call could be pleasant or could be something that is easy on everybody's eyes. Right. But having said that, each one has got a space to tell their own story, which is good. And at the end of the day, it's all about good stories and good characters. For actors, it's nice to play characters which are not necessarily the kind that people expect a woman to be, or a child to be, or a man. So there are lots of areas, lots of grey areas, a lot of colors, and which are very, 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 very welcome. Amazing. Thank you so much, all of you, for joining Mirchi Plus.